Okay, Ramakant, so now I'm going to start your SNAP interview for HAL and you have to strength of materials, correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so how you define stress? Tell me. Sir, stress force per with the internal resisting force per unit area is called stress, sir. And what about strength? So strength is the maximum allowable stress that material can bear can be known as a strength, sir. Okay. And let's suppose you have a axial bar which is subjected to an axial load and it is made up of brittle material. Then tell me from which plane it can fail. So for axial bar, if it is bilateral material and apply for the tensile force, then it's a break, I think, for 0 degree or 90 degrees, sir. 0, 90. Yes, sir. Which one? 0 or 90? Sir, 90 degrees, sir. 90 degree. Can you Yes, draw this figure? yes, sir. It's like From which plane it fails? some So which one uh, is the reference plane? From which plane sir, you for measure the angle? sir, I'm measuring from the applied load. Um, that, You just show me the angle. Which yes, first you write which one is reference plane and from which plane you measure this 90-degree angle. Means yes, sir. you also show the failure plane. Sir, in if I show in Mohr circle, sir, then it will Mm-hmm. be 180 because it's two times, sir. 180 Uh, degree. yes, sir, because in Mohr circle it's two times, sir, and in actual life, sir, it is like 90 degrees, sir. You show me in your object, not in your Mohr circle. Yes, sir. So which one is your reference plane or loading plane? So my reference plane is means the axis of x-axis is my loading plane, sir, or loading axis, Axis sir. is the loading plane, but I am asking Sir. which one is your reference plane? So my reference plane is a vertical plane, sir, I think. So if it is vertical plane, then it fails from which plane? It also this object may fails with a plane parallel to this your loading plane, correct? Yes, So it sir. must be a 0 degrees. And why you say 90 degrees, Yes, sir. Then it's 0 degree. correct? Yes, Okay, sir. so next, suppose you have a hydrostatic state of stress, then which theory of failure is you can apply for design? Sir, for hydrostatic stress, sir, I can apply for maximum principal stress, sir. Maximum principal stress. Yes, sir. Sure. Yes, sir. Why not a MSST and MDT theory? Sir, MSST and MTT is not applicable for hydrostatic stress because, sir, in hydrostatic there is no shear stress present, sir. It's purely on principal stresses only. That's why it Mhm. cannot be applicable, sir. Okay. Okay, and how you define beam? So beam is a member which can be subjected to axial loading, tensile or compressive both, sir. Axial loading. Yes, sir. Axial loading or transverse loading? Sir, both can be applicable, sir. Both can be applicable. Yes, sir. Sure.
Uh, yes, sir. Suppose you have a cantilever beam which is subjected to an axial load. Yes, sir. Then what type of stresses may induced? If it is applicable for axial stress, and then only tensile or compressive load can be generated, sir. In axial direction, Yes, sir. correct? Yes, sir. But if it is subjected to an axial load, then this is called bar. This is not a beam. The function of beam is Yes, to sir. resist a transverse load only, Yes, sir. correct? A beam is a structural member which is subjected to transverse load, Yes, sir. not axial. Axial loaded member is called bar, Yes, sir. correct? Yes, sir. Okay. And what do you mean by inflection? Inflection, sir. Mm-hmm. So you're talking about the inflation means the moment change the sign from that. And what is counterpoint of counterflexion? Actually, it's a point of contraflexion, sir. And in mathematical terms, if the means function change the is the magnitude or directions, and then it's inflation, I think. No, wrong. Okay, what do you mean by slenderness ratio? Slenderness issue, sir. Sir, it's effective length upon minimum um, K minimum, sir. K minimum. Yes. What do you mean by K minimum? Sir, I'm not knowing his actual name, sir, but it's related to the moment Radius of about gyration. yeah, radius of gyration. Yes, sir. Okay, and what do you mean by column? Sir, column is a member which is subjected to generally compressive load, sir. Mm-hmm. It is a vertical structural member which is subjected to axial compressive load, Yes, sir. correct? Yes, sir. So, okay, Ramakant, so you need more preparation, correct, right now? Yes, sir. कई सारे चीजों को आप थोड़ा सा लाइटली ले रहे हो, अभी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे प्रॉपरली. Even if you unable to define bar, beam, and column, then this is not good, correct? Yes, sir. Okay, as a mechanical engineer or civil engineer, and if you opt strength of material, then you must know these terminologies, correct? Yes, sir. एक बार और थोड़ा Yes, सा sir. स्टडी करो और एक बार फिर से इंटरव्यू दो, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. एनीथिंग एल्स? तो Yes, एक sir. दो Sir, दिन जैसे प्रिपरेशन करो, जब टाइम एक दो दिन बाद जब आप प्रिपरेशन कर लो तो मुझे मैसेज कर देना yes, sir. स्लॉट के अ, लिए. सर जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी में अगर मैंने अप्लाई किया था और इंटरव्यू का कॉल आया सर, उसमें मैक्सिमम कौन से सब्जेक्ट्स के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं सर मैकेनिकल में? ज्यादातर इंटरव्यू वहाँ पे होगा आपका मैनेज HR इंटरव्यू होगा, बिहेवियरल इंटरव्यू होगा, यस सर. ठीक है? तो टेक्निकल में बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करना है, ज़्यादा एम्फसाइज करो वहाँ पे, ठीक है? और अभी यस आप सर. कर क्या रहे हो प्रेजेंटली? सर मैंने मास्टर किया हुआ है सर IIT मद्रास से डिजाइन में. डिज़ाइन में किया हुआ है. और फिर अभी कर यस क्या सर. रहे हो? सर अभी कुछ नहीं सर. तो जॉब नहीं कर रहे क्यों? नहीं सर, एक्चुअल में वो रिसर्च था सर, मेरा MS प्रोग्राम था, तो अभी रिसर्च सबमिशन बाकी है सर उसके लिए. अच्छा, अभी आप IT में ही हो? यस सर. MSR प्रोग्राम ज्वाइन किया था? यस सर. प्लेसमेंट का क्या सीन है? सर प्लेसमेंट में अभी बैठा नहीं हूँ सर. क्यों? सर अभी वो नवंबर में सर प्लेसमेंट्स होते हैं, तो अभी स्टार्ट नहीं हुई सर इसे. तो PhD क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हो? सर एक्चुअली MSR सर के अभी बाद तो मेरा PhD क्या कम टाइम लगेगा PhD करने में? यस सर, बट अभी सर मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि सर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं सर, और वहां पर ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाऊँ अपनी चीज़ों को जो नॉलेज अभी तक गेन किया, और वहां पर नॉलेज लेके बाद में अगर फर्दर मेरे को रिक्वायरमेंट होगी तो PhD करूं सर. अच्छा, तो क्या फिर से 5 साल लगाना पड़ेगा? अभी क्या है कि तुम्हें सिर्फ 3 साल ही लगेगा, तुमने 2 साल तो ऑलरेडी स्पेंड कर ही दिया है, और एक साल तो पूरा यस सर. रिसर्च वर्क ही है था आपका. तो हार्डली यू सर. टेक 2 to 3 years टू कंप्लीट योर PhD. तो थोड़ा सा इसके बारे में सोचो. अगर इफ यू यस सर. डोंट गेट एनी चांस फ्रॉम एनी PSU, देन यू मस्ट कंटिन्यू योर हायर स्टडी, यस. करेक्ट? तो थोड़ा सा इसके बारे यस में सर. सोचो.
क्योंकि एमएसआर के बाद पीएचडी आसान हो जाती है, ऑलरेडी आप रिसर्च वर्क कर चुके होते हो। यस सर। ठीक है, चलो तो एचआर इंटरव्यू दो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से, एंड मास्टर्स डिजाइन में कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा कुछ डिजाइन में हम देखेंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो ऑल द बेस्ट। यस सर, थैंक यू सर। हाँ।